Hello class, how are you all? I hope y'all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, in our previous session, we have done the topic mission space, and in today's session, we will start with the next topic from the GK book, that is Cricket Crazy. Okay, the topic is given at page number 26, that is Cricket Crazy. Okay, so let's open your book on page number 26, that is Cricket Crazy. So I'm just writing the topic here, that is Cricket Crazy, given at page number 26, Cricket Crazy. So what is the meaning of the topic Cricket Crazy? इसका मतलब क्या है? According to this topic, we will discuss about the various facts, figures and various things about the cricket. हम cricket के बारे में कुछ अलग अलग चीज़ें जानेंगे. Okay, so that how many players are there in cricket? cricket में कितने players होते हैं, ठीक है? cricket में कितने कितने ओवर्स है ना, आपने देखी होगी क्रिकेट. यू मस्ट हैव सीन द क्रिकेट. सो इन दिस टॉपिक वी विल टॉक अबाउट द क्रिकेट. Okay, so various facts, I said various facts and figures about the cricket that we will discuss in today's session. Okay, so देखिए cricket is the one of the very famous game in our country. Starting with the paragraph that is given in your book. Cricket is played between two competing teams of 11 players. The teams take turns at batting and bowling. Okay, the wicket is made of 3 stumps and 2 horizontal pieces on top of the stumps called bails. Whereas on the other end of the pitch, an umpire stands behind the wicket. The bowler bowls the ball towards the batsman. Okay, so now that is cricket. Okay, so here they have just given a small paragraph about the cricket. Okay, so in which they had just given the introduction about the cricket. Okay, तो जो हमारी क्रिकेट जो गेम है इसकी एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इन्होंने दिया हुआ है. तो देखिए क्रिकेट इज प्लेड बिटवीन टू कॉम्पिटिटिंग टीम्स ऑफ 11 प्लेयर्स. तो जो क्रिकेट जो गेम है वो 2 टीम्स के बीच में खेली जाती है एंड ईच टीम हैज़ 11 प्लेयर्स. और हर एक टीम के कितने प्लेयर्स होते हैं? 11. ठीक है. सो दैट मीन्स सपोज देयर इज अ मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. सो देयर विल बी द playing 11 team members in Indian team, and there will be playing 11 members or the players in the Pakistan team. So there is playing 11 की जो कि ग्राउंड के ऊपर खेलती है like they do batting and bowling. Okay, so the teams take turns at batting and bowling. The wicket is made 3 stumps and 2 horizontal pieces on the top stumps called bails. ओके, तो देखिए जो टीम्स हैं ये दोनों टीम जो भी खेल जिन दोनों टीम के बीच में गेम हो रही है क्रिकेट की, इन दैट से बोथ द टीम दे टेक अ बॉलिंग एंड द बैटिंग टर्न. दोनों टीम बैटिंग और बॉलिंग की जो टर्न है वो लेती हैं. ओके, लाइक पहले एक टीम बॉलिंग जो टॉस जीतती है दे ओके फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेक अ टॉस. ओके, द कैप्टन्स ऑफ बोथ द टीम दे मेक अ टॉस. Okay, and the whosoever captain has won that toss, so he will decide whether he wants to bat first, his team wants to bat first or ball first. Okay, so whatever the decision is made by the made by the toss winning team, okay, that will be followed by the other team as well. Okay, so at the time one team is batting and the other team is bowling, and the other innings, so the other team is bowling and the last one तो जो कि बैटिंग करती थी वो बॉलिंग करने शुरू हो जाती है. जो बॉलिंग करती है they start batting. Okay, so this is a vice versa you can say game that is being played between them. Okay, so the next is
इसके बैटिंग बॉलिंग के अलावा देयर आर 3 स्टंप्स दैट इज ऑन द बैटिंग साइड एज वेल एज द बॉलिंग साइड। तो दोनों साइड पे स्टंप्स होते हैं, 3 स्टंप्स, 3 विकेट्स जिनको हम बोलते हैं। एंड उसके ऊपर छोटी छोटी बेल्स होती हैं। आपने बेल्स देखी आजकल तो वो आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी वाली बेल आती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं ज़्यादा लाइट वाली बेल्स आती है जिसको टच होते ही उसमें से ऑरेंज कलर की रेड कलर की लाइट चलनी शुरू हो जाती है, दैट इज नोन एज बेल। ओके, as the batsmen of the one team try to score runs, the players of the other team on the field called fielders take up various fielding position to stop them from scoring runs। ठीक है, तो जिस टीम के प्लेयर जो बैटिंग कर रहे होते हैं, दे वांट टू स्कोर मोर एंड मोर रन्स। ओके, और वेयर एज द टीम हु इज़ बॉलिंग ऑन द फील्ड, जिनको जो टीम बॉलिंग कर रही है फील्ड के ऊपर, ठीक है, तो उनके जो प्लेयर्स हैं जो कि फील्डर्स, फील्ड में जो प्लेयर्स होते हैं दैट इज नोन एज फील्डर्स जो होते हैं उस टीम के ओपोनेंट टीम के, दे जस्ट टेक वेरियस पोजीशन ऑन दैट क्रिकेट ग्राउंड। ओके, वो अलग अलग पोजीशंस ले लेते हैं क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। उसके बाद दे स्टॉप देम फ्रॉम स्कोरिंग द स्कोर, और वो उनको रोकते हैं स्कोर्स बनाने से। ओके, सो दिस इज द डिफरेंट पोजीशंस टेकन बाय दिस टीम इज to stop them from scoring। Okay, so the different positions taken by the fielders of the bowling team to stop is taken to stop the batsman to score more runs। जो बैट्समैन दोनों फील्ड में होते हैं दूसरी टीम के, उनको रन्स बनाने से रोकने के लिए। ओके, some of these fielding positions are mid on, mid off, square leg, third man and slip and gully etc। सो देखिए दीज आर द फील्डिंग पोजीशंस। ओके, तो अगर आप में से जो मोस्टली जो बॉयज़ हैं उनको क्रिकेट देखना पसंद होता है, सो दे मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस पोजीशन। सो दीज आर द नेम ऑफ द पोजीशंस लाइक मिड ऑफ, मिड ऑन, स्क्वायर लेग, थर्ड मैन, स्लिप्स एंड गुली। सो दीज आर द नेम ऑफ द पोजीशंस ऑफ द फील्डर्स। ओके, जो फील्डर्स होते हैं वो ये पोजीशंस लेते हैं ऑन द ग्राउंड। ओके, okay, so next a tidbit is also given here, so let's talk about it as well। In the early days of cricket, all bowling was underhand and bowlers lobbed the balls towards the batsman। Okay, it was only in 1835 that the rules were changed to allow the arm to be raised up by the shoulders। The modern over the shoulder bowling actions are officially allowed in 1864। ओके, तो देखिए पहले बोलते हैं कि जो बॉलिंग करवाते थे, अभी तो देखना आप वो पोजीशंस लेते बॉल करवाते हैं, तो पहले से वो नीचे से एकदम कहते हैं ना, नीचे से रिडवी बॉल करवाते थे उनको। फिर धीरे बाद उनको अलाउ किया गया दैट दे कैन रेज द बॉल अप टू द शोल्डर। इन द ईयर 1835 में उनको अलाउ किया गया, रूल चेंज करके कि वो तो जो बॉलर है वो अपनी बॉलिंग करवाते हुए अपनी आर्म को भी रेज कर सकते हैं, लेकिन पहले उनको नहीं, तो पहले उनको बॉल धीरे से नीचे से ही करवानी होती थी। ओके, उसके बाद 1864 में नाउ उसके बाद ऑफिशियली उनको अनाउंस कर दिया गया, मतलब जिसने आपने देखा होगा बाउंसर बॉल जो करते हैं। सो दिस इज ऑफिशियली अनाउंस्ड बाय द क्रिकेट काउंसिल। ओके, दैट इज ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हु लुक्स आफ्टर द ऑल द इवेंट्स एंड लुक्स आफ्टर द ऑल द क्रिकेट काउंसिल्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। जैसे BCCI, दैट इज द नेम ऑफ द BCCI is the Cricket Council of India। Okay, okay, so in the next page some questions are given at page number 27। so we are going to answer these questions as well। so answer the following questions। the question number 1 is which cricket team won the first world cup। सबसे पहला वर्ल्ड कप जीतने वाली क्रिकेट टीम कौन सी है। सो विच क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड कप, दैट इज वेस्ट इंडीज। सो वेस्ट इंडीज हैज़ वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड कप। जितने भी क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, ओके, तो सबसे पहली टीम ऐसी कौन सी थी जिसने कि वर्ल्ड कप जीता था, दैट इज वेस्ट इंडीज। सो वेस्ट इंडीज इज द फर्स्ट कंट्री हु हैज़ वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट इज वेस्ट इंडीज, that is West Indies। so West Indies is the country who has won the first World Cup। okay, second one, in which year did India win its first World Cup। इंडिया ने अपना सबसे पहला वर्ल्ड कप कौन से ईयर में जीता था। इंडिया ने आज तक सिर्फ 2 वर्ल्ड कप जीते हैं,
एंड सबसे पहला वर्ल्ड कप उन्होंने कौन से ईयर में जीता था? इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट वर्ल्ड कप in the year 1983. So India has won its first World Cup in the year 1983. At that time, Kapil Dev was the captain of Indian cricket team. Okay, and he is the captain. He is the first captain under whose guidance the India won its first World Cup in the year 1983. Okay. So the answer of the second question is 1983. So this is the year in which India has won its first World Cup in cricket. Okay, under the captaincy of Kapil Dev. Moving next to the third one. Which Indian cricketer became the player of the tournament in the T20 World Cup 2016, scoring 273 runs in 6 matches? Okay, तो जो 2016 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था. Okay, so there are two types of cricket world cup. The first is the one day world cup. ओके, एक तो पहला जो वर्ल्ड कप है जो कि इंडिया ने जीता था 1983 में, दैट इज़ अ वन डे वर्ल्ड कप. ओके, सो जिसमें कि 50-50 ओवर्स की इनिंग्स जो है कि दोनों टीम्स खेलती हैं. एंड द सेकंड इज़ द T20 वर्ल्ड कप. T20 वर्ल्ड कप में क्या होता है बेटा? ईच टीम प्लेस 20 ओवर मैच. ठीक, मतलब सॉरी, जो ये 20 ओवर्स का मैच होता है, सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज T20. 2020 बोलते हैं, but the other name that is given to it is, short name that is given is, that is T20. So India, okay, so in the T20 World Cup 2016, okay, so which Indian cricketer, कौन से Indian cricketer को player of the tournament से who was the Indian cricketer who became the player of the tournament? तो T20 वर्ल्ड कप का जो टूर्नामेंट था उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको चुना गया था? फॉर स्कोरिंग 273 रन्स in just 6 matches. So this is the present captain of our Indian cricket team, that is Virat Kohli. So Virat Kohli has been awarded, okay, has been named the player of the tournament in the T20 World Cup. Okay, and he has scored 273 runs in just 6 matches. So the answer is Virat Kohli. So the answer of the third one is Virat. He is Virat Kohli. He is Virat Kohli. Okay. Moving next to the fourth one. The fourth is, who won the 2015 Cricket World Cup? 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? Who won the 2015 Cricket World Cup? So the 2015 Cricket World Cup was won by Australia. So 2015 Cricket World Cup was won by Australia. Okay, 2015 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने. So the answer of the fourth one is Australia. So the answer of the fourth is, that is Australia. Okay. Next, the fifth one, that is the last one from the chapter. Which team won the Women's World T20 in 2016? So there was also T20 World Cup, T20 World Cup for the women's cricket team as well in the year 2016 only. Okay, so which team has won the women's World T20 Cup in the year 2016? That is West Indies. तो T20 World Cup जो कि women's का हुआ था in the year 2016. So which team has won that? किसने उसका कौन सी टीम को मिला था इसका अवार्ड? दैट वाज वेस्ट इंडीज. सो वेस्ट इंडीज हैज वॉन द T20 वर्ल्ड कप, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप. दैट इज वेस्ट इंडीज. दैट इज वेस्ट इंडीज. क्लियर? So these are the answers from the first 5. The first is, okay, so देखिए सबसे पहला जो मेंस वर्ल्ड कप था दैट वाज वॉन बाय वेस्ट इंडीज, और जो वुमेन्स वर्ल्ड कप सबसे पहला था वो भी वेस्ट इंडीज ने जीता था. दैट मीन्स दोनों वर्ल्ड कप सबसे पहले जीतने वाले कौन सी टीम? दैट इज वेस्ट इंडीज. ओके, इन द ईयर 1983 इंडिया हैज वॉन इट्स फर्स्ट वर्ल्ड कप एंड विराट कोहली वाज
became the player of the tournament in the 2016 T20 World Cup, whereas Australia is the team who has won the 2015 Cricket World Cup. Clear? Chaliye, so with this we have completed the chapter, but still we have much time left. So let's move to the next topic, that is from your book only, given at page number 29, that is Quiz Yourself 1. Okay, so now we will start with page number 29, that is Quiz Yourself 1. Okay, so all of you open your books at page number 29, that is Quiz Yourself 1. Quiz Yourself 1. So this is the topic, and this is given at page number 29. Okay, that is Quiz Yourself 1. Okay, so let's begin with the question that is given on the page number 29. Okay, so this is the topic, that is Quiz Yourself, which means in this you will get the different questions that are related to a different topic. The quiz में क्या होता है बेटा, all of you, I have already told you, quiz मतलब the different questions from different topic. Okay, so all the questions will be from the different topics. Okay, so let's begin with the first one. Which political party does Arvind Kejriwal represent? तो जो अरविंद केजरीवाल है वो किस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं? So Arvind Kejriwal represents Aam Aadmi Party. Okay, so he is also the current CM of New Delhi. Okay, Delhi के not New Delhi only. So Arvind Kejriwal is also the current CM. अभी जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली के कौन है? दैट इज अरविंद केजरीवाल, एंड ही इज एज द रूलिंग पार्टी इन द दिल्ली इज आम आदमी पार्टी. सो जो दिल्ली में जो रूलिंग पार्टी है वो कौन सी है? दैट इज आम आदमी पार्टी, एंड अरविंद केजरीवाल इज द CM ऑफ दिल्ली एज वेल. ओके, एंड he also represents, you can say he is the leader. Okay, can it the captain of the ship जिसको हम बोलेंगे. So he is also the leader of आम आदमी पार्टी. ओके, सो ही इज़ द मेन लीडर, या तो कह लीजिए चीफ, जो सबसे ऊपर द लीडर. ओके, सो ही इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आम आदमी पार्टी, ही रिप्रेजेंट्स आम आदमी पार्टी. ओके, सो द क्वेश्चन इज विच पॉलिटिकल पार्टी डज अरविंद केजरीवाल रिप्रेजेंट? दैट इज आम आदमी पार्टी. सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन इज दैट इज आम आदमी party. That is Aam Aadmi Party. Clear? Second one. In which country is the Louvre Museum located? Louvre Museum कौन सी country में है? So Louvre Museum is a very famous museum, and that is located. Sorry, in which city? Because here the question, in which city? So this is a very famous museum, and the name of the museum is Louvre Museum, and it is located in Paris, France. तो फ्रांस कंट्री में एक सिटी है, दैट इज पेरिस. ओके, एंड यू कैन फाइंड दिस लॉवरे म्यूजियम देयर ओनली. अलॉन्ग विद दैट यू कैन फाइंड अ वेरी ब्यूटीफुल मैन-मेड स्ट्रक्चर, दैट इज Eiffel Tower, which is a symbol of love. Okay, so Eiffel Tower and Louvre Museum, they both are located in Paris. So you can say that they both are the landmark for the Paris as well as all the France. Okay, so the question, in which city is the Louvre Museum located? So Louvre Museum is located in Paris. So the answer of the second one is Paris. Answer of the second one is Paris. Paris. Okay, that is Paris. Moving next to the third one. What is the capital of Andhra Pradesh? Andhra Pradesh की capital क्या है? So what is the capital of Andhra Pradesh? So the capital of Andhra Pradesh is Amravati. Amravati is the capital of Andhra Pradesh. Okay, okay, that is the name of the city, that is Amravati. Amravati is the capital of Andhra Pradesh. Amravati.
Amravati is the capital of Andhra Pradesh. Fourth one. Who became the Vice President of India in the year 2007 and was re-elected in the year 2012? Okay, so who became the Vice President of India in the year 2007? तो 2007 में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने थे? एंड ही वॉज अगेन re-elected as a vice president of the India in the next after this. Okay, आपको पता है that the tenure of a vice president, prime minister and the president is only of 5 years. हमारी कंट्री में कोई भी रूलिंग पार्टी हो, ठीक है, कोई भी रूलिंग पार्टी हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, all they have the tenure of all these इन सबका टेन्योर क्या, दैट इज़ ओनली ऑफ 5 ईयर. तो 5 साल तक प्राइम मिनिस्टर भी वही रहते हैं, प्रेसिडेंट भी वही रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी वही रहते हैं, एंड द रूलिंग पार्टी इज ऑल्सो सेम. ओके, बट अगर कोई पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, सो एट दैट टाइम इट ऑल्सो चेंजेस, बट बेसिकली इट इज़ ऑफ फॉर 5 ईयर्स. सो इन द ईयर 2007, सो सन 2007, सो इन द ईयर 2007 मोहम्मद हामिद अंसारी was elected as the Vice President of India. जो मोहम्मद हामिद अंसारी हैं वो हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, वेयर एज ही वॉज री इलेक्टेड. तो आफ्टर द टेन्योर ऑफ 5 ईयर, तो 5 साल का टेन्योर जब उनका ख़त्म हुआ इन द ईयर 2012, उसके बाद दोबारा इलेक्शंस में ही अगेन बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. ओके, सो दैट मीन्स मोहम्मद हामिद अंसारी is elected, or you can say he was the Mohammad Hamid Ansari was the vice president of India from the year 2007 to from 2000 from the year 2007 to 17 he was the vice president of India. So he served as Mohammad Hamid Ansari served as the vice president of India from the year 2007 to 2017. That means for continuous 10 years he became the vice president of our country. Okay, so the answer of the fourth one is, who became the vice president of India in the year 2007 and was re-elected in the year 2012? That is Mohammad Hamid Ansari. So the answer of the fourth one is, that is Mohammad Hamid Ansari. Mohammad Hamid Ansari is re-elected as the Vice President of India for continuously 2 times. Fifth one. Which brand of Ayurved consumer goods is Baba Ramdev associated with? So Baba Ramdev कौन से consumer good के brand के साथ associated हैं? Okay, and it is being said that he is जो उनके products हैं, that is also related to the Ayurved, the ancient system, ancient Indian medicinal system, that is Patanjali. Okay, so Baba Ramdev is associated with Patanjali, so under which they recommend that all the products that is made of Patanjali, they are totally related to the Ayurved. Okay, they are inspired from the Ayurved. Okay, so question was, which brand of Ayurved consumer goods is Baba Ramdev associated with? So Baba Ramdev is associated with Patanjali. So the answer of the fifth one is Patanjali, that is Patanjali, that is Patanjali. So Baba Ramdev is associated with Patanjali. Sixth one. The answer of the sixth is, which season of the year appears first in the Standard English Dictionary? Okay. For sixth question, I just given a small explanation. So this is the answers from up to question number 5. You can pause it here and just revise it and note it down in your books if you have not done.
चलिए, moving next to the question number 6. The question number 6 is, according to the standard English dictionary, which season comes first? ठीक है, standard English dictionary के हिसाब से सबसे पहला season कौन सा आता है? Okay, so now we have, as you know, okay, so first of all let's write down the name of all the seasons. That is, so okay, so starting with the January, it is winter, then it's winter, then autumn, then summer, then spring, and then again winter. Okay, so these are the 4 seasons that you can see on our, okay, that is winter, autumn, summer, and spring. So these 4 seasons you can find in our country during the different period of time. So now the question is, according to the standard English dictionary, which season will come first? So all of you know that in the dictionary you will find all the words in alphabetical order. तो अगर आपने कभी डिक्शनरी देखी है तो डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स दिए होते हैं दे ऑल आर गिवन इन अ प्रॉपर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो अगर हम इन चारों सीजन्स की बात करें, सो विच सीजन विल यू फाइंड फर्स्ट इन द स्टैंडर्ड इंग्लिश डिक्शनरी? सो देखिए, दिस विंटर स्टार्ट विद W, ऑटम स्टार्ट्स विद A, समर स्टार्ट्स विद S एंड स्प्रिंग स्टार्ट्स विद S. सो देखिए, इन तीनों में से अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर विच season will come first in the dictionary? That is A, that is autumn. So according to the standard English dictionary you will find the autumn season appears first in the standard English dictionary. So the answer of the 6th one is autumn. So the answer of the 6th one is autumn, that is autumn, AUTUMN, that is autumn. Clear? Let's move to the 7th one. The 7th is, when should John get up if he has to be worked by 9 a.m. and it takes him 15 minutes to get dressed, 20 minutes to have his breakfast and 35 minutes to drive to work? Okay, so there's a boy whose name is John and he must reach his office by 9 a.m. जॉन को अपने ऑफिस 9 a.m. तक पहुंचना है. ओके, सो ही हैज़ टू रीच हिज ऑफिस बाय 9 a.m. तो उसको कितने बजे उठना चाहिए? एंड दे हैव जस्ट गिवन द डिफरेंट एक्टिविटीज दे परफॉर्म इन द डिफरेंट टाइम पीरियड. तो अलग अलग टाइम में, ओके, तो टोटल टाइम ड्यूरेशन दैट ही टेक्स फॉर परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी, सो दैट मीन इट टेक्स 15 minutes to get dressed. So for getting dressed it takes him 15 minutes. Okay, then it takes him 20 minutes to have breakfast. So that means for breakfast he takes 20 minutes. Okay, next 35 minutes to drive. Okay, for driving he takes how many minutes? That is 35 minutes. So that means now we have to calculate the total time taken by him. 15 minutes plus 20 minutes, that is 35 minutes. 35 plus 35, okay, that is 70 minutes. So that means he must get up 70 minutes before 9 a.m. तो 9 a.m. से 70 minutes पहले उसको उठना पड़ेगा. So what will be the time? 70 minutes before 9 a.m. So 60 minutes before कितना होगा? That is 8. इससे 60 minutes पहले, 60 minutes before कितना होगा? That is 8 a.m. and 8 a.m. में 10 minutes और कम कर दीजिए 70 minutes के लिए, that is 7:50 a.m. So that means he must get up by 7:50 a.m. Okay, so this is the answer of the 7th one. So he must get up by 7
7:50 a.m. Okay, so he must get up by 7:50 a.m. if he wants to reach his office by 9 a.m. Clear? So rest of the questions from the topic we will do in the next session. So with this, I'm just ending the session here only. So I'll see you again very soon next session. So till then, everybody, have a good day.